Times Now is the voice of the oppressed and downtrodden. Today, we get you a story that no other channel has dared to report. This is because the Latins media is notorious for only pushing a line that suits their narrative. In their world, or their worldview rather, a story isn't a story till a victim is from the minority and the perpetrators are from the majority. But in Palamu, Jharkhand, where Times Now's reporting team has been camping for the past 48 hours, the victims belong to the Dalit caste, the poorest among the poor Hindus. The oppressed class have neither the clout nor the resources to fight for resources. Today, Times Now will fight their fight. Times Now's Mohit Bhatt traveled to Palamu in Jharkhand, where 50 families became refugees overnight in their own land as a rampaging mob razed their homes. They cry and plead as they narrate their ordeal. Their houses have been razed by bulldozers and their places of worship desecrated. Times Now, which went to the spot which they called home and visited over there, where they tell us how JCBs and bulldozers have plowed through their houses. They also tell us how they pleaded repeatedly with Mukhtar and his accomplices to at least spare their temple, but to no avail. Today we are reporting from the Palamu district over here in Jharkhand. Times Now is the only channel who is at the spot because we bring out the real news and the real stories that are there in our country. And we see that a section of media, the section of a liberal lobby will neglect this. They will not tweet on this. They will not fact check this because it's about the Dalits and the Muslims and how Muslims have completely raised the society over here. Around 50 to 20 houses. And what you see on the ground is not just the debris or the stones over here. These are the remains of houses of Dalit which were being razed down by the members of Muslim community. What they say is that they were beaten up by the members of the Muslim community, and the Muslim community members said that this land belongs to the Eidgah and hence they have no right to live over here. Eidgah की ज़मीन इस पे किसी पे notified नहीं है। यह ईदगाह की ज़मीन नहीं है और यह मदरसा का ज़मीन है। जीएम लैंड है। जी यह जीएम लैंड है। परिवारों का ये भी आरोप है कि शिवलिंग तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, उनके हाथ जोड़ते हैं। यह देखने वाली बात है। देखिए तुलसी का पौधा वहाँ पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन अली नरोड़ा से कहूँगा आप दिखाइए। यह सनातनी है कि सनातन धर्म में लोग ये किस तरह से यहाँ पे जो देखिए आप शिव जी का पूजा करते हैं, इनकी ये शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ पे जो है पूरा ये जो है तुलसी का एक मंदिर बना रखा है। सनातन धर्म में आस्था का केंद्र है। वो पत्थर को ही पूजते हैं और भगवान मानते हैं। ये भी तोड़ा गया बिना जी, उसे भी वो ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ते रह गए, हम हाथ जोड़ते रह गए। जेसीबी लगा करके तोड़ा गया, उसमें किसी चीज को बरगलाया नहीं गया कि इसको साइड किया जाए। Muslims have completely razed the society over here. Around 50 to 20 houses were being completely razed over here by Muslim community forcefully with the use of JCB. The questions are also being raised on the Hemant Soren government. And Times Now gets to the tales of the local survivors. They have spoken about their perpetrators and said that despite their pleas, they were abused, thrashed and their homes razed. Listen in. A shocking incident has come to light from Palamu district where the houses of Dalit who were living over here, they were completely razed down. हम लोग 1-1.5 बरस से वहाँ रहे थे, खानदानी जगह जमीन हम लोग का है सर, तो वहाँ हम लोग रह रहे थे 3 बरस से चलकर वहाँ, और हम लोग सब पूरा 4400 आदमी का हम लोग के ट्रैक्टर में बुकिंग करके वहाँ बिका गया है सर। तो अच्छा ये बताइए कि जब बुलडोजर लाया गया, जेसीबी लाई गई, आप सबके घर तोड़े गए? हाँ, इस्राइल मुखिया घर तोड़वाए हैं साहब। इस्राइल मुखिया, हाँ, खड़ा होकर इस्राइल मुखिया घर तोड़ाए हैं हम लोग। की बात है, परसों की बात है? परसों रोज की बात है सर, कल सांझ के बात है साहब। कल तक लेटेस्ट भी वहाँ चला है साहब। कल तक भी कितने लोग हैं? आप क्या मांग करते हैं आप, और खास तौर पे कौन कौन लोग थे? आप लोगों को पहचाना कौन है, कौन कौन लोग थे और उन्होंने आपसे क्या कहा आपके घर तोड़ते हैं? सब मियाँ लोग हैं सर। सर वहाँ के मियाँ थे, मुफ्तार डीलर थे सर, जनक थे सर, और गोविंद पाल थे, और वहाँ के। और क्या कहा गया आपसे? जमीन आपकी नहीं है, कहा क्या गया? रसूल मियाँ सर। क्या कहा क्या गया आपसे? क्यों तोड़ रहे हैं आपके मकान? कह रहा है कि उन लोग बोल रहा है पूरा मियाँ समाज की यहाँ नहीं रहना है, भागो यहाँ से, तुम लोग नहीं भागोगे तो काट देंगे बल्ले बच्चे को। धमकियां भी दी गई? हाँ जी, मारपीट भी किया प्रशासन की तरफ से। आपको मारपीट भी करी गई? हमारा हाथ धोआ के लगा के ढोस दिया है मालिक, मेरा शिवलिंग सब बिक दिया है। They are living in fear. They are again saying that if the proper protection is not being given to them, then they are also living in fear. But the question is, how exactly and how does people from a certain community had the audacity to raise down their houses with a bulldozer, and what exactly was the administration doing?
So what has the Soren Sarkar done so far to help them and bring them to justice? Out of 150 of the accused who are part of the mob, only 3 have been arrested. Meanwhile, their land hasn't even been returned to them. The administration hasn't yet reclaimed their lost property, and instead of trying to rehabilitate them in that location, are trying to rehabilitate them elsewhere. Listen in to the DC. Simply a land dispute between that one person and other this Dalit community. There उन लोग वो लैंड डिस्प्यूट के चलते प्रॉब्लम आया है, तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन लिया है और उन लोगों को जो भी हटाया गया है उनको ऊपर हम लोग एफआईआर किया है। अराउंड 3 लोगों को अभी ऑलरेडी जेल भी भेज चुका है, 12 लोगों को पर एफआईआर बाइने में एफआईआर किया है। और वहाँ लैंड डिस्प्यूट जहाँ है, जो एग्जिस्टिंग लैंड डिस्प्यूट है, वहाँ हम लोग 144 सेक्शन भी लगा के उसमें अभी एज एंड टुडे स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। और 150 लोगों के ऊपर ये लोग अज्ञात एफआईआर किया है। एंड वी बिकॉज दे नेवर हैड एनी काइंड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, एंड उनके लिए अभी ज़मीन हम लोग आपके सामने में जाके देखा हूँ। वी आर गोइंग टू सेटल द लैंड टू देम एंड वी विल सेटल देम परमानेंटली। वी विल अकोमोडेट अंडर देम इधर अंडर द प्रॉमिस्ड आवास योजना और अम्बेडकर आवास योजना घर बना देंगे हम लोग। And the local MLA went to meet the Dalit families now, in fact, who have been left disconsolate and destitute. He blames the Soren government of minority appeasement. देखिए, सबसे पहले तो दुखद बात है जी कि जो सरकार वर्तमान सरकार हेमंत सरकार है, जिहादियों को बढ़ा दिया है। हर एक जगह जहां देखिए अंकिता कांड, तो फलना जगह ई कांड, तो चतरा कांड, और यहाँ भी कांड जो है बहुत दुखद समाचार है। इन लोगों को जमीन देंगे 5 से 10 डिसमिल और अम्बेडकर आवास बनाएंगे और उसके बाद इन लोग को भोजन व्यवस्था सारा चीज हम लोग करेंगे, पढ़ाई की भी व्यवस्था करेंगे। Now here the Secular Brigade and the shocking buck passing by the RJD and the SP. Instead of calling out the bigotry, these parties are now blaming the BJP for conspiracy. क्या है पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी भी हमें नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं पूरी जानकारी लेने का, लेकिन हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि झारखंड में सरकार में हमारी पार्टी भी शामिल है, कि झारखंड की सरकार, शासन और प्रशासन सबके साथ न्याय करेगा और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगा, चाहे वो कोई हो। इस तरह की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सरकार में नहीं है वहां तूल दे रही है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में SC/SC एक्ट को पूरे तौर पे कोशिश की गई कि पूरे देश में इसको कमजोर किया जाए। कुछ डायरेक्शंस भी ऐसे आए, तो अब पूरे मुल्क में देख रहे हैं, अगर आप 2014 के बाद, तो दलित एट्रोसिटीज में बहुत इजाफा है। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक प्लान तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार को किस तरह से घेरा जाए, वो नेशनल लेवल पर कोशिश चल रही है। Let's take this across to our guest. Joining us with us is Manish Barriarr, who's a political analyst. IP Singh is spokesperson of the Samajwadi Party. Kuntal Krishna is a political analyst. Let me start with Tushar Gupta, senior editor of Swaraj. Tushar Gupta, you heard over there the shocking explanation coming in from RJD and SP. Now, the SP seems to suggest that somewhere the central government is responsible for diluting the atrocities against SC/ST Act. Your response to that? Good evening, Madhav. See, there are two questions. Number one, why is it becoming a pattern that there is always about one community being oppressed by another community? You take the Ram Navami processions, you take any Hindu procession, forget the Ram Navami procession or the Ganpati procession or Kavar Yatra, anything. Why is it becoming a pattern, state after state, that there is one Hindu community which is being attacked by the Muslim community? This is the first worrying question. And for the explanation that just you played on your channel, the attacks also happened in Karnataka and Madhya Pradesh, which is a BJP ruled state, but they also happened in West Bengal, which is a TMC ruled state. They happened in Rajasthan as well, which is a Congress ruled state, and it happened in Jharkhand now, which is a Congress alliance ruled state. So it's not about the politics as many politicians want to dismiss. This is a pattern which is becoming far more obvious, and we are not acknowledging it. The second question, Madhav, is
We, since 2014, was sold the idea of Dalit Muslim unity, that Dalits are oppressed within the Hindu ecosystem. They find their political unity with the Muslims. Where is that unity today? These families, which you rightly defined as oppressed within the oppressed, are today running from their homes because they have been threatened. One of the person on the clip is saying that they have been told to run away or they will be killed. Let me get a response. Where is the Dalit Muslim unity that the Lutyens media wanted to sell us? Okay, let's get a response from Kuntal Krishna on that. Kuntal Krishna, where is the Dalit Muslim unity is a question coming in from Tushar Gupta. But beyond that, why is it that these individuals have not been brought to justice? You have 3 out of 150 who have in fact been arrested. Now that's an abysmally low number for a crime that happened over 48 hours ago. Madhav, first, thanks Times Now for bringing out this issue so that the victims can get the justice as soon as possible. But let me make very clear to you, this is an administrative issue. And BJP, I was hearing to the local MLA, BJP is actually trying to turn this administrative issue into a political communal issue. This is the problem. BJP is doing so because after Maharashtra, they are hell-bent upon putting Jharkhand government into trouble. So they do not want to be... Is it the government's inaction that is questionable, or is it the opposition's reaction that is questionable? Even if it is administrative failure, many will ask, why has the government failed? Law and order is a state subject. It is for the state government to bring to justice those persons who have carried out such a heinous crime of destroying the houses, of desecrating the temple. Do you think this should be taken lightly, Mr. Krishna, in any state of the country for that matter? Madhav, please let me finish, Mr. Gupta. Madhav, 12 people have been named in FIR. 3 have been arrested, and police is working round the clock. DC himself is there. DC and Sadar SDO, DC himself is there along with team. And state government has assured that they are going to give 2 to 5 decibel of land to the people displaced. This issue, this particular issue is an administrative issue. This is an issue related to revenue and land. Well, speedy justice is what everybody is looking forward to. But Manish Barriarr, that is not seem to be the case. Are you saying that this is, do you agree with Kuntal Krishna when he says an administrative issue is being made into a political and religious and communal issue? That is his argument. Do you agree with him? Good evening, Madhavji and my co-panelists and all the viewers. I think, I heard the RJD and SP spokesperson and also Kuntalji. I think all 3 of them are trivializing a very, very important issue and a very serious issue. See, on one hand, we can always say that it's a law and order situation in terms of that the chief minister is actually moving, and all the MLAs are out and there is a political uncertainty around it. So therefore, the administration has collapsed. But it cannot be termed as a law and order issue as such. I think this is a mindset issue, right? This is a issue of what we have seen, ghettoisation, where one community wants to really, oppress others. They want to retain their numbers, or maybe they want 100% themselves in the villages, which we have seen in our country, right? This is not for the first time happening, and unfortunately, it's not going to be the last time unless there is an absolute message from the administration, which has happened in UP for that matter, that we are not going to take any nonsense. And this is, you are talking about Palamu district, and if you know, the per capita income is 14,000 rupees per capita income. So we are talking about extremely poor set of people. And for them, and also, temples have been destroyed, the entire livelihood. Imagine the entire family, those set of people actually staying in the open for the last couple of days, right? So, it's something which is strict action has to be taken, and I'm really shocked that how people are trivializing this such a important issue. They should have been jailed up till now. All right, IP Singh, अभी तक जो भी लोग वहाँ पे थे, जिन्होंने इस तरह की घिनौनी हरकत करी, सबको सलाखों के पीछे रखना चाहिए था, पुलिस को उनकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन 150 में से केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और कई अपने हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि ये साफ तौर पे तुष्टीकरण की राजनीति नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अच्छी सरकार है, कानून व्यवस्था का मामला है और श्री हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत अच्छी तरह से उसे हैंडल किया है। देश में जो बहुत अच्छा कैसे, बहुत अच्छे की क्या परिभाषा है सर?
बहुत अच्छी की क्या परिभाषा है? नहीं, मुझे अगर जहां लोग सड़क पे खड़े हैं, एक दो मिनट तो बोलने दीजिए, शायद मुझे 10 सेकंड भी बोलने नहीं दिया आप। नहीं, आप बोलिए सर, बट आप कैसी बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी हैंडलिंग हुई है? किस हिसाब से आप कह रहे हैं? देश में 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े ये निशाने पर आ गए हैं। इन्हें लगातार बीजेपी सरकार टारगेट करती है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, आपको पता होगा कि श्री रघुवर दास गुप्ता झारखंड के मुख्यमंत्री थे और वो अपना चुनाव तक हार गए। तो बीजेपी को ये बात खटक रही है जब से श्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। कहीं कांग्रेस के एमएलए तोड़े जा रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश। यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, ये जरा थोड़ा साफ तौर पे बताइए, क्या किया है बीजेपी ने इस पूरी घटना में? हो रही है बीजेपी इस घटना से कहां जुड़ी है? विषय है और सरकार बहुत ही प्रॉपर, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सर? काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है झारखंड में? बिल्कुल, हमने यही बात कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है और राज्य सरकार बहुत ही प्रॉपरली उसे हैंडल। सर पूरी तरह विफल दिख रही है। 50 लोग सड़क पे खड़े हैं, उनको घर में रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता, जो दोषी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और आप कह रहे हैं बहुत अच्छी हैंडलिंग है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ आईपी सिंह जी, ये बहुत अच्छी हैंडलिंग की कौन सी परिभाषा है और अब कौन सी दुनिया में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ लोग सड़क पे हैं जो जिन्होंने ये हिंसा करी है वो पूरी तरह खुली छूट मिली है उनको, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हैंडलिंग है। आपको उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, हाथरस में जो कुछ उन्नाव में हुआ, वो बातें आपको याद नहीं है? सर वो सारी बातें हमने रिपोर्ट भी करी है और उनकी चर्चा भी करी है, और जहां उत्तर प्रदेश की सरकार की विफलता रही है उसके बारे में भी हमने डिबेट किया है। लेकिन यहाँ पे जब लोग सड़क पे आ गए हैं, क्या ऐसे वक्त पे उन्हें भूलना सही है या गलत है? We leave it for our viewers to decide because we're completely out of time. I would like to take some responses, but we're completely out of time. Kuntal Krishna, IP Singh, Manish Barriarr and Tushar Gupta, I'd like to thank all of you for joining us. The nation is watching what is happening in Palamu right now. And as the government delays action in this matter, certainly questions will be raised, and this is bound to become an even more sensitive political issue in coming days. That's all for now, ladies and gentlemen. We're slipping into a quick break.